Hello students, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do some important 1 marks question from chapter 3 Linear Equations in Two Variables. Students, note that these questions are important from exam's point of view. This is worksheet 3.1 consisting of 7 important questions of 1 marks each. These are the questions which we will do today. If you want, you can note down and solve these questions and then check your answers with the solutions I am going to provide to you. So let's start with question number 1. For what value of k the system of equations x plus 2y minus 3 equals to 0 and 5x plus ky plus 7 equals to 0 has no solution? k के किस मान के लिए समीकरण x plus 2y minus 3 equals to 0 और 5x plus ky plus 7 equals to 0 के कोई हल नहीं है। आइए सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेयर करते हैं एंड वी गेट a1 equals to 1, b1 equals to 2, c1 equals to minus 3, a2 equals to 5, b2 equals to k and c2 equals to 7. Students, हमें फाइंड करना है for what value of k the equations has no solution. And for no solution, we know a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. Let's put the values here and we get 1 by 5 equals to 2 by k not equal to minus 3 by 7, and from 1 by 5 equals to 2 by k, we get the value of k as 10. Let's move to question number 2. If pair of linear equations in two variables is consistent, then the lines represented by two equations are, options are intersecting, parallel, always coincident, intersecting और coincident. यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो दो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, समांतर, हमेशा संपाती या प्रतिच्छेदी या संपाती। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ा था कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन जिसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं और दूसरा सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जिसकी कोइंसिडेंट लाइंस यानी संपाती रेखाएं बनती हैं। Therefore, here the answer is D, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट यानी प्रतिच्छेदी या संपाती रेखाएं। Now let's do question number 3. For what value of a the following pair of linear equations has infinitely many solutions? a के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? 2x plus ay equals to 8 and ax plus 8y equals to a. Students, हम इन given equations को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x plus ay minus 8 equals to 0 and ax plus 8y minus a equals to 0. आइए अब इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं एंड वी गेट a1 equals to 2, b1 equals to a and c1 equals to minus a. Then a2 equals to a, b2 equals to 8 and c2 equals to minus a. Students, हमें फाइंड करना है for what value of a the equations has infinitely many solutions, and for infinitely many solutions we know a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. Put the values and we get 2 by a equals to a by 8 equals to minus 8 by minus a. We can solve this as 2 by a equals to a by 8, a by 8 equals to minus 8 by minus a and 2 by a equals to minus 8 by minus a. Now, by solving first part,
we get 16 equals to a square. Therefore, a equals to plus minus 4. Next, let's solve second part and we get a square equals to 64. Therefore, a equals to plus minus 8. And by solving the third part, we get minus 2a equals to minus 8a. Therefore, a equals to 0. So students, for a equals to 0, 4, 8, minus 4 and minus 8, system of equations have infinitely many solutions. Now let's move to question number 4. How many solutions will be there for the following pair of linear equations? निम्न समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? स्टूडेंट्स, हम गिवन इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं x plus 2y minus 8 equals to 0 and 2x plus 4y minus 16 equals to 0. अब इन्हें कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से एंड वी गेट a1 equals to 1, b1 equals to 2, c1 equals to minus 8, a2 equals to 2, b2 equals to 4 and c2 equals to minus 16. Therefore, a1 by a2 equals to 1 by 2, b1 by b2 equals to 2 by 4 which is equal to 1 by 2 and c1 by c2 equals to minus 8 by minus 16 which is equal to 1 by 2. Therefore, we get a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. Students, हमें पता है कि ऐसी कंडीशन में हमें infinitely many solutions मिलेंगे. Therefore, this pair of linear equations have infinitely many solutions. आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. For which value of c the pair of equations 2x plus cy equals to 1 and 3x minus 5y equals to 7 have a unique solution. c के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x plus cy equals to 1 और 3x minus 5y equals to 7 के अद्वितीय हल होंगे? Students, let's write these equations as 2x plus cy minus 1 equals to 0 and 3x minus 5y minus 7 equals to 0. अब इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से कंपेयर करते हैं एंड वी गेट a1 equals to 2, b1 equals to c, c1 equals to minus 1, a2 equals to 3, b2 equals to minus 5 and c2 equals to minus 7. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि c की किस वैल्यू के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. एंड फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो वैल्यूज पुट करते हैं एंड वी गेट 2 by 3 is not equal to c by minus 5. Therefore, c is not equal to minus 10 by 3. Therefore, this pair of linear equations have unique solutions for all values of c except minus 10 by 3. Let's do question number 6 now. Do the equations x plus 3y minus 1 equals to 3 and 2x plus 6y equals to 6 represent a pair of coincident lines? Justify your answer. क्या समीकरण x plus 3y minus 1 equals to 3 और 2x plus 6y equals to 6 संपाती रेखाओं का युग्म निरूपित करती हैं? अपने जवाब का औचित्य साबित करें. Students, we can write the given equations as x plus 3y minus 4 equals to 0 and 2x plus 6y minus 6 equals to 0. अब इन्हें जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से कंपेयर करते हैं एंड वी गेट a1 equals to 1, b1 equals to 3, c1 equals to minus 4, a2 equals to 2, b2 equals to 6 and c2 equals to minus 6. Therefore, a1 by a2 equals to 1 by 2,
b1 by b2 equals to 3 by 6 which is equal to 1 by 2 and c1 by c2 equals to minus 4 by minus 6 which is equal to 2 by 3. Therefore, we get a1 by a2 equals to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2. Students, हमें पता है कि ऐसी कंडीशन में हमें नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस मिलती हैं. Therefore, this pair of linear equations represent parallel lines and has no solution. आइए अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. Find nature of lines representing the linear equations 2x minus y equals to 3 and 4x minus y equals to 5. समीकरण 2x minus y equals to 3 और 4x minus y equals to 5 की निरूपित करने वाली रेखाओं की प्रकृति बताइए. Students, we can write these given equations as 2x minus y minus 3 equals to 0 and 4x minus y minus 5 equals to 0. और इन्हें हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल से एंड वी गेट a1 equals to 2, b1 equals to minus 1, c1 equals to minus 3, a2 equals to 4, b2 equals to minus 1 and c2 equals to minus 5. Therefore, a1 by a2 equals to 2 by 4 which is equal to 1 by 2. b1 by b2 equals to minus 1 by minus 1 which is equal to 1. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं a1 by a2 is not equal to b1 by b2 और हमें पता है कि ऐसी कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं. Therefore, this pair of linear equations represent intersecting lines. Students, these were the important 1 marks question of chapter 3 linear equations in 2 variables. Do practice these questions. Thank you. Bye bye. See you in the next video.